Thank you, Mahesh, for joining. So, Arjun Prabhu, make it live when I start Mangalacharan, not when I end Mangalacharan. So Mangalacharan is very important. So, today we are discussing the 15th chapter of the Bhagavad Gita, 6th verse. Please recite after me. If possible, one devotee can unmute. Anyone? इनके लिए भी possible है. Yesh Prabhu, Raghav Prabhu, anyone can unmute. And Arjun Prabhu, please spotlight my video. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तद्भास्यते सूर्यो न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. तद्धाम परमं मम। Beautiful verse. Translation and purport by Jivangi Sisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. जय। That abode, that abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. Purport. The spiritual world, the abode of the Supreme Personality of Godhead Krishna, which is known as Krishna Loka, Golok Vrindavan, is described here. The spiritual sky, in the spiritual sky, there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity, because all the planets are self-luminous. We have only one planet in this universe, the sun, which is self-luminous. But all the planets in the spiritual sky are self-luminous. The shining effulgence of all those planets, called Vakunthas, constitutes the shining sky known as the Brahmajyoti. Actually, the effulgence is emanating from the planet of Krishna, Golok Vrindavan. Part of that shining effulgence is covered by the Mahatattva, the material world. Other than this, the major portion of the shining sky is full of spiritual planets, which are called Vakunthas, chief of which is Golok Vrindavan. As long as a living entity is in this dark material world, pen is not working. I don't. It's not working fine. Anyway, so it says everyone, yeah. As long as living entity is in this dark material world, he is in conditional life. But as soon as he reaches the spiritual sky, by cutting, by cutting through the false perverted tree of this material world, he becomes liberated. Then there is no chance of his coming back here. In his conditional life, the living entity considers himself to be the lord of this material world. But in his liberated state, he enters into the spiritual kingdom and becomes the associate of the Supreme Lord. There he enjoys eternal bliss, eternal life, and full knowledge. Why should we be captivated by this information? Wow, this is a very important point. Why should we be captivated by this information?
He should desire to transfer himself to that eternal world and extricate himself from this false reflection of reality. For one who is too much attached to this material world, it is very difficult to cut that attachment. But if he takes to Krishna consciousness, there is a chance of gradually becoming detached. One has to associate himself with devotees, those who are in Krishna consciousness. One should search out a society dedicated to Krishna consciousness and learn how to discharge devotional service. In this way, he can cut off his attachment to the material world. One cannot become detached from the attraction of the material world simply by dressing himself in saffron clothes. Very important point again. One cannot detach himself from the attraction of this material world simply by dressing himself in saffron clothes. Hmm? He must become attached to the devotional service of the Lord. Therefore, one should take it very seriously that devotional service, as described in the 12th chapter, is the only way to get out of this false representation of the real tree. In chapter 14, the contamination of all kinds of processes by material nature is described. Only devotional service is described as purely transcendental. The words Paramam Mama are very important here. Actually, every nook and corner is the property of the Supreme Lord. But the spiritual world is Paramam, full of six opulences. In the Upanishads, it is also confirmed that in the spiritual world, there is no need of sunshine or moonshine, for the whole spiritual sky is illuminated by the internal potency of the Supreme Lord. That supreme award can achieved only by surrender and by no other means. Beautiful. So now finally Krishna is again describing, although जब वो मटेरियल वर्ल्ड को काटने की बात कर रहे थे भगवान इससे 2 वर्ष पहले, जस्ट आई वुड से 1 वर्ष पहले, इसके पहले 15.3 and 15.4 में, and Krishna is saying cut down this material world. Then he gave us the information about the spiritual world. Not really information about the spiritual world, but he just told us that you should go to that supreme abode. आप वहां जाओ एंड वहां जाके क्या करो, वहां जाके जो सुप्रीम पर्सन है उन्हें सरेंडर करो. यस. एंड देन वहां जाने का क्वालिफिकेशन, सो हियर ही जस्ट सेड दैट वो प्लेस जाना चाहिए जहां पे जाके कोई वापस नहीं आता, एंड वहां पे परम भगवान को सरेंडर करना चाहिए. देन ही टोल्ड द क्वालिटीज जो कि हमको जरूरत है, जिसके बिना हम वहां एंटर नहीं कर पाएंगे, एंड दीज क्वालिटीज आर नेसेसरी. जस्ट वन सेकंड. Hare Krishna, bro. I'm giving a class, so Hari bol. I'm giving a class, so अभी मैं respond नहीं कर पाऊंगा. I'm sorry. Yes. So yeah. So here भगवान ने क्वालिफिकेशन बताया कि ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं. Now here again, Krishna is speaking about his eternal abode. अपने धाम के बारे में अब भगवान वापस से बता रहे हैं कि वो कैसा है. Here he is specifically pointing out one quality of his abode, supreme abode, जहाँ पे भगवान रहते हैं, वो जो धाम है. abode मतलब धाम. So वो जो धाम है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो ना तो सन से ना ही मून से इल्यूमिनेट होता है, ना ही सूरज ना चांद से वहां प्रकाश आता है, ना ही किसी प्रकार की
फायर से या इलेक्ट्रिसिटी से वहां पे उजाला आता है। एंड वहां पे जाने के बाद कोई दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। So let's discuss as per the purport of Prabhupada what we can take out from this one, this particular. Not pen is not working. Maybe it's been charged. तो शायद गर्म ज्यादा हो रहा है इसलिए maybe not work fine. It's not working on it. No, it's not working. Anyway, so we make this continuous. Okay. Some साथ हो रहा है बट क्लियर नहीं आ रहा और लेट हो रहा है। ठीक है, एनीवे इसको यहीं पे छोड़ते हैं। Let's come to the traditional way of Bhagavad Katha, doing all these digital ways. So, okay. So here Krishna is saying that वो spiritual abode जो है उसको कोई लाइट की जरूरत नहीं है। इससे हमको क्या समझ में आता है या हम इससे क्या ले सकते हैं? What is the particular thing which we can take from this particular verse? Out of so many things about the spiritual world, why Krishna is mentioning only this light wala part? Anyone? Raghav Prabhu Yesh ko और रत्नेश को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत कुछ होता है। पूरे गोस्वामी के लिटरेचर में वृंदावन के पास चेंज बता रहे हैं। फुल ऑफ ब्लिस है, फुल ऑफ वैरायटी है एंड अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट है जिनमें इतना सारा वेल्थ है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ भगवान सिर्फ ये लाइट वाला चीज ही क्यों हाईलाइट करेंगे, बाकी इतनी सारी चीजों का सब है ना ऑडिबल? आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे है ना, बोलिए ना, जस्ट अनम्यूट एंड से। बोलिए। So I guess जैसे लाइट जब पास होती है तो हमें क्लियर या फिर डार्कनेस ऐसा फील नहीं होता। सो अगर
स्पेशियस स्काई में सभी प्लैनेट्स सेल्फी जैसे, तो वहाँ पे कोई एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की फियरनेस नहीं है, बिकॉज each and every planet itself is excellent. Yes, that is true. That is very true. कि मटेरियल वर्ल्ड को कुंठा बोला गया है. इन दिस वर्ल्ड वी सी दैट एवरीथिंग इज फुल ऑफ डार्कनेस एक्सेप्ट द सन. अगर सन प्लैनेट को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ डार्क है. इवन मून गेट्स द इफल्जेंस फ्रॉम द सन ओनली. एंड सो अगर सन एक वो जो बत्ती है वो बंद हो जाए तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस. यू नो, इलेक्ट्रिसिटी भी हम कैसे जनरेट करते हैं? सन से ही जनरेट करते हैं. फायर भी सन से ही आती है. Without sun, there will be no wood, there will be no fire in any substance, by which we can illuminate anything. So ultimately, there is only one object, effulgent object in the whole universe, that is sun, and which allows us to see things in this world, and then we can experience this world. Otherwise, it is full of darkness. If we see Amavasya ki raat mein, it's complete dark. We cannot even see our hand without any external light. And as you mentioned, darkness, अंधकार, जो कि राघव प्रभु के साइड दिख रहा है, शायद लाइट नहीं है वहां पे. पीछे से थोड़ा सा उजाला आ रहा है. यस राघव प्रभु. हाँ एग्जैक्टली प्रभु जी. यस, लाइट नहीं है ना. हाँ, सब पीछे से थोड़ा सा उजाला आ रहा है, लाइट नहीं है, अंधकार है. सो अंधकार में यू कैन नॉट डू मच. यू आर ऑलवेज इन फियर. डार्कनेस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव इमोशंस. एंड डार्कनेस में नेचुरली फियर रहता है. क्यों नेचुरली फियर रहता है? बिकॉज आपको पता ही नहीं है ना नेक्स्ट मोमेंट क्या है, या नेक्स्ट foot when you are going to place or you are going to move, what you are going to encounter. And इसलिए व्यक्ति रस्सी को भी सांप समझ सकता है. कोई हल्की सी चीज टच हो जाती है तो वो डर जाता है. हाँ, क्योंकि डार्कनेस में वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स. वी कैन नॉट सी एनीथिंग. एंड so that is also absence of knowledge. So darkness मतलब absence of knowledge. When there is dark, you cannot see anything properly, so you are naturally not in knowledge. When you can see, then you are in knowledge. Okay, अभी मैं ये रूम में देख पा रहा हूँ, यहाँ ये टेबल है, यहाँ ये चेयर है, पंखा चल रहा है, ये कितने वहां पे का फोटो लगा है, बढ़िया सारी चीजें में देख रही है. तो दिस इज नॉलेज ना. टू सी एंड what all these things are there, this knowledge. But if I enter into some room which I have previously not entered ever before and it is pitch dark, then what? I'm completely ignorant. Even in this room, if I enter after a few hours and there is no light, completely dark, and if someone asks what are all the things in this room, I cannot describe. Maybe someone has placed something new which was not there before, and वो अभी आ गई रखा गई वहां पे, but मैं नहीं देख सकता उसको. तो what's the point? The point is I am not in knowledge. Darkness means ignorance. Light means knowledge. And ignorance से by default डर लगता है. अच्छा, एग्जाम पढ़ लिख के एग्जाम में बैठते हैं तो डर लगता है, या बिना पढ़े एग्जाम में बैठते हैं तो डर लगता है? नेचुरल है ना. जब पढ़ाई नहीं की अच्छे से, पता है हमने मक्कारी कर ली, या जितना अच्छे से सिलेबस कवर होना था वो नहीं हुआ है, और फिर हम एग्जाम में बैठते हैं तो डर लगता है. बट अगर आप बढ़िया तैयारी करके बैठे हो, है ना, बेस्ट तरीके से, तो डर नहीं लगता. एक बार एक शर्मा जी थे, वो अपने बेटे को बहुत पीट रहे थे, बहुत पीट रहे थे. पड़ोसियों को दया आ गई, तो क्या कर रहे हैं शर्मा जी, मर जाएगा, आपको ही बेटा है, क्यों इतना क्यों पीट रहे हैं आप? तो बोले नहीं, ये बदमाश इस बार भी फेल होगा, इसलिए मैं इसको पीट रहा हूँ. तो समझिए, इस बार भी फेल होगा, इतना कैसे कॉन्फिडेंस है? तो ये ये क्या बात है मतलब? तो बोले एक्चुअली क्या है ना, इसका 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और मुझे पता है ये नालायक तो इस बार भी फेल होगा, तो पहले पीट के जाऊंगा इसको. So sometimes, people or parents are very much confident about our knowledge or ignorance, you can say. So anyway, so this ignorance, ignorance से डर लगता है. आप सोचो ना, ऐसे रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो पता ही नहीं वो रास्ता कहाँ जा रहा है. I know when I was driving, what happened, कोविड जब थोड़ा सा खुला था, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, एंड आई थिंक फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच की बात है. सो समा खुल तो गया था, बट
तो क्या था, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के लिए, एंड मेरे सारे डॉक्यूमेंट जबलपुर में रखे थे. So somehow one of my crazy friend is still very dear to me. He is also practicing Krishna consciousness. He is my childhood friend, a school friend. So we both decided let's do an adventure. उसकी बाइक से हम दोनों जाएंगे. एंड मैंने बोल दिया कि मैं उसके घर वालों के साथ जा रहा हूँ कार से, उसने बोल दिया वो मेरे घर वालों के साथ जा रहा है कार से इंदौर, सॉरी जबलपुर. एंड जबलपुर फ्रॉम भोपाल इज लाइक अराउंड 300 किलोमीटर समथिंग. So just one side. So so we just did that adventure. It was winter time, I still remember. But I'm telling you, in the return journey, जाते समय भी हम एक फॉरेस्ट से होते हुए गए थे. इट्स प्योर फॉरेस्ट, मतलब जो कि फॉरेस्ट होता है ना रियल, उसमें पहले ही बोर्ड लगे हुए हैं. यू कैन एनकाउंटर एनी एनिमल स्पीशीज which you have heard or seen in TVs in this forest. So be aware. And when you are in two-wheeler, you have not much protection. You know, if lion comes in front of you, then he will be chanting Hare Krishna, he will be chanting Mahaprasade Govinda. So, so we cannot do much, yes. तो जाते समय तो कुछ डर नहीं लगा, इतने बढ़िया आगे से निकाल लिया हमने, इतने तेजी से निकाल लिया. बट रिटर्न में we were driving from that forest around 1 o'clock, 1 after midnight, 1 a.m. And truly speaking, Prabhu, I still feel कब भगवान वैसे प्रेयर्स में आपके लिए चैंट करूंगा. So intense, completely Krishna conscious. क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिख रहा था हमको, डेंस फॉरेस्ट ऐसा लग रहा था, मतलब truly कि यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं है, डार्कनेस है बस. There was no light, there was no street light, nothing. And our headlight was also not so good. It's just dim somehow. So फर्स्ट तो हमें जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम नहीं जा पाएंगे, हम खड़े ही हो गए, उसके एंट्री पे खड़े हो गए. एंड देन समहाउ एक बाइक वाले आए, उनके पीछे एक दादा बैठे थे और एक भैया वो बाइक चला रहे थे. बोले क्या हो गया, तो क्यों डर रहे हो, चलो. तो वो बोले हमें पीछे फॉलो फॉलो कर लेना, चलो. अब वो एक्सपर्ट हो, जाते आते रहते हो वो जंगल से, वो तो तेज भगा के निकल रहे थे. हम पीछे पीछे ब्रेकर्स पे स्लो कर करके जा रहे थे, तो कभी कभी वो लॉस्ट हो जाते थे हमारे आई साइड से. पीछे की उनकी लाल बत्ती दिख रही थी, बस उसी को फॉलो कर रहे थे. पर वो काइंड थे, बहुत कंपैशनेट थे, तो वो रुक जाते थे. देन वी यूज्ड टू फॉलो देम. एनीवे द होल पॉइंट इज अगेन darkness, same forest. In the daytime, no fear. We were like singing songs, like not Madhya songs, but just some songs, and I think some of them Krishna conscious nahi the, शायद Madhya songs भी सुन रहे होंगे, I don't know. And was talking and going through, enjoying the ride, but coming back full of fear because there was no light. Yes, so light brings knowledge, light brings faith, hope, positivity, and there's no anxiety, really speaking, in light. But then when there is no light, then all these things are absent and negative counterparts of these things are present. Now again the question is still remaining to be answered, that why Krishna have just, इसके बाद फिर again भगवान बताएंगे कि कैसे जीवात्मा मेरे इटर्नल पार्ट एंड पार्सल है, and वो मुझे भूल के यहाँ आ गए and उनको मेरे पास वापस आना चाहिए. So but the point is, out of so many things which are happening in the spiritual world, material world is just 1/4 of it total creation, and the spiritual world is very dynamic, very active. Once Bhaktisiddhanta Swami Thakur Prabhupada used to print daily, I think, or monthly, one magazine. ISKCON में तो monthly print होता है, but गौड़ीय मठ में most probably I think it was daily. I'm not sure, daily or monthly. It was some magazine, Gaudiya Math used to print. Like ISKCON में Prabhupada started Back to Godhead magazine. Back to Godhead. And Gaudiya Math का भी कोई magazine चलता था, उसमें articles print होते थे. So once a person asked Bhaktisiddhanta Swami Thakur Prabhupada that, Swamiji, where do you get so much content to print these magazines, very frequently, and you're giving us on a regular basis. ये कंटेंट आता कहाँ से आपके पास इतना सारा? हाँ राघव, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, so I thought maybe you are muted. Anyway, so वो जब पूछे तो भक्तिसिद्धांत भाई संजय जी आपको बात gave a very beautiful reply.
he said, here in Bengal, there are many newspapers, and every newspaper is publishing news. And some of the news are similar, but many of the news are different from each other, and they are like around 10 pages, 12 pages on an average. And इतना content ये सब वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो, and then West Bengal is just one of the state of India. India is just one of the country of this Asia continent, and then this Asia is just one of the continent of the whole planet. And truly speaking, this whole planet, Earth, is just an insignificant grain in a carry bag containing millions and trillions of grains of planets. Yes, so it's just insignificant. And this whole universe is just one insignificant grain in comparison to the innumerable universes in the material world. And this whole material world is just 1/4 of the total creation. The reality, the major part is the spiritual world. As we see, city का एक छोटा सा हिस्सा जेल होता है. Majority of the city is for the public. So same is in the total creation. A small part is the material world, prison house for the living entities who rebel against God, who don't want to live keeping God in center. But the majority is for the pure souls. Yes. So then he said, if you can get so much of news, so much of things happening in this world on a daily basis, of one insignificant to the power insignificant to the power insignificant to the power infinity लगा सकते हैं of this West Bengal, why I cannot give a daily magazine for the spiritual realm, which is so dynamic and so active. So the point is the spiritual world is very dynamic. The whole Goswami literatures are speaking about the melodious pastimes which are ever taking place in that realm of existence, which are purest and full of love and joy. Bhagavatam, you see, Bhagavatam, Krishna's pastimes are described in such a great detail. Bhagavatam has 18 volumes, but the 4 volumes and also that 2 of the 4 big volumes are dedicated for Krishna's pastime. So that is all happening in the spiritual world. That is not part of this material world. Then naturally question comes, then why Krishna just said about the illumination part and not the other things which are happening in the spiritual world? The very simple answer to this is Krishna reveals the knowledge as per the person who is a desire to accept it, will be willing to accept it. Bhagavad Gita is for all. For all the spiritual seekers, Bhagavad Gita is a guide. Bhagavad Gita is not, although truly speaking, who can understand, that is a different thing. I am saying who all can access. So Bhagavad Gita is accessible to all. Everyone access Bhagavad Gita. Mayavadi, Chayavadi, Kayavadi, scientists, philosophers, Western, Greek, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everyone. The most popular philosophical book in the world is Bhagavad Gita. But Krishna, being the Supreme Lord, or anyone, any personality, you can say the richest person of the world, why he will reveal to the whole world what pastimes or what things I'm doing at my home and how my home really looks like. Will Nita Ambani, Mukesh Ambani will give all the details of their Antilia? I think that is what the name of their home. No, they'll not. They'll not. There are many stories in that building, and every story there is a different facility to enjoy. There's a whole cinema house in one floor, a whole swimming pool in one floor, then like that. There are multiple floors having different facilities. So, but they are not going to tell us everything in detail. Where is the locker? Where is this? Where is that? Why they will tell?
But who knows it? Those who are very near and dear to them, those who visit their home, they know it. So Krishna knows that Bhagavad Gita is accessible for all, and he is not willing to reveal everything about his spiritual home, his true home where he resides, uh, because he does not feel comfortable, and everyone will not be able to accept also. And many of the people, what they think? They think God is impersonal, it is just light, it is just all pervasive light. So for them, this particular description is like 100% hands proved. Ye dekho. The abode of mind is not illuminated by sun or moon nor by electricity. It means what? The supreme Brahman is just light. So their conception of the supreme abode or supreme destination is that it is all light. And here, by reading this verse, they become even more confident that yes, see, here Bhagavad Gita is the greatest literature. Here Krishna says that it is all light. So those who have such kind of misconceptions or who want to just have faith in these things and don't want to surrender to Krishna, the form of Krishna as a person Krishna, not just as someone who has no hands, no legs, nothing, you know. So those who blaspheme Krishna like this, why Krishna will tell them that this is my home where I am God? If Krishna does not impose himself upon anyone. किसी पे भी भगवान अपने आप को इम्पोज नहीं करते. जिसको सच में इच्छा है, जो सच में सिंसियर है हार्ट में, जो सिंपल है अपने हृदय में, जो सच में सच्चाई जानना चाहता है भगवान के बारे में, कृष्ण रिवील्स हिमसेल्फ टू हिम ओनली. इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, डोंट टेल दिस नॉलेज, डोंट गिव दिस नॉलेज टू एनीवन who is not austere, who is not my devotee, and who is not willing to listen. जो तपस्या नहीं किया हो, जो मेरा भक्त ना हो, और जो सुनने को तैयार ना हो, उसको मत बोलो. वो नहीं सुनेगा, वो मूर्ख है, वो रास्कल है. प्रभुपाद बोल रहे थे, मैं सुना था प्रभुपाद का लेक्चर. भगवान श्री कृष्ण हिंदी में, हिंदी वाला ऑडियो था, प्रभुपाद का हिंदी बहुत अच्छा लगता है. प्रभुपाद बोले वो रास्कल है, वो नहीं सुनेगा. कृष्ण बोले मत बोलो उसको. बट हम रिस्क लेते हैं. Devotees take the risk. They go to such rascals and they tell, surrender to Krishna. That is your ultimate goal. Don't go here and there. Don't suffer here and there. You know, you'll ultimately come back to this material world, even if you go to Brahmajyoti. But they don't accept. Prabhupada was saying, they try to kill us. Prabhupada was being attacked. Life threats have been given to Prabhupada. In India, in India, what to speak about Western countries? Why? Because he was speaking the truth, and the people cannot accept it always. So, yeah, and therefore Krishna has said, at the end of Bhagavad Gita, that devotees who give this wisdom of mine, Bhagavad Gita, to others is most dear to me. No one is as dear as him to me in the past, and there will no one dear to me than him in the future also. So the ultimate point is here to be understood. Krishna has just highlighted this point of my abode being all effulgent, full of light, and then Prabhupada is explaining in the purport where this light comes from. So this light ultimately comes from Krishna's body, emanating from his body, and then from Golok Vrindavan, the original, the supreme planet, the supreme abode, and then from there through all the Vaikuntha planets. So all the planets, all the entities are full of knowledge, full of bliss. Satchidananda. So everyone is effulgent there in the spiritual world. And that effulgence altogether makes a boundary between the material and spiritual world that is known as Brahmajyoti. As easy as that, when agar sun ki baat kar lein, are we able to see the sun clearly, or can we even look at sun for so long, around 2 p.m., when it's really shining on its peak? Can we look at it directly with our naked eyes? No, Prabhuji. No, we cannot do it for so long. Even if we try to do it now, we'll just be seeing very effulgent light. That's all. No details of the planet. No details of the planet. कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि
सन किस कलर का है, वहाँ हो क्या रहा है, what is happening there. Although at other times, we can see like okay, it's round and sometimes reddish दिखता है सन, इवनिंग या मॉर्निंग टाइम जब देखेंगे हम तब देख सकते हैं, या कुछ दूसरे इक्विपमेंट यूज करके हम देखते हैं कि हाँ यस देयर इज so much heat, so much fire is being generated at sun. But when it's full light is coming out at 2 p.m. we cannot look at it. Similarly, Brahma Jyoti covers the Vaikuntha planets which are behind that Brahma Jyoti. And the impersonalists, they are not able to approach the planets, the variety behind the scene. Logically, naturally we know, इस पे तो कभी डाउट ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि Krishna teaches us even very difficult, complicated subject matter by very simple things also in life. And that is the beauty. The ultimate knowledge cannot be so complicated or difficult to digest. It is always easy. The complicated things, we make it complicated. Otherwise, life is simple. Krishna is very simple. He keeps things simple and for easy as possible for us to understand. Anywhere in the world, we don't have an experience of light coming out just like this without a source, or from a source which does not have any form. Do we have any experience? Do we have? Yes, no. Have you seen any light coming from nothing or something which is nothing? No, they have not. No one. Here I'm sitting under tube light. It's cylindrical in shape. Light is coming from it. Ultimately, it's coming from sun, which is having a shape. So similarly, how the Brahma Jyoti can just be there without any source? And Krishna also says, Brahmano hi pratishtaham. Why I don't understand when मैं हमेशा ये bewilder हो जाता हूँ कि ये मायावादी लोग गीता को कोट करते हैं, गीता पढ़ते नहीं ना ढंग से. Why? मतलब it's so clear. Krishna is saying, Brahmano hi pratishtaham. I am the source of Brahman. Brahma Jyoti, the light, that light which you are seeking, my dear friends, is coming from me. Why are you getting so bewildered, so disturbed? Yes. So that effulgence is emanating from the planet of Krishna, Golok Vrindavan. That is what Prabhupada is saying. And then, as long as living entity is in the dark material world, he is conditional. But जब वो spiritual side को पहुंच जाता है, यानी perverted tree जो है material world का इसको कट कर देता है, तो वो कैसा हो जाता है? Liberated. Conditioned और liberated का अंतर क्या है? Condition का मतलब क्या होता है रत्नेश को? रत्नेश को? What do you mean by condition? वही मैंने पहले के ऐसा अटेंड नहीं किया था तो मुझे पता नहीं. अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं. यश को आपको पता है कंडीशन का मतलब क्या होता है? Not exactly, but I can try. So condition is a living entity see living entity to condition according at the number of. For example, now current situation. तो मैं समझ नहीं पाया एग्जैक्टली क्या बोले आप. लिविंग एंटिटी, सॉरी. जैसे दो पोजीशंस होती है, एक कंडीशन टाइप और एक पोजीशंस. कंडीशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन. सो कंडीशन मीन्स कंडीशंस के हिसाब से हमें एक्ट करना होता है. मतलब की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को थोड़ा मतलब ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं इस पोजीशन. क्लोज बट नॉट क्लियर. तो पवित्र को आप ट्राई करेंगे? Would you like to try? Okay, anyway, राघव को. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. कंडीशन से ये समझ सकते हैं कि काफी सारी शर्तों से बंधा हुआ है. लाइक इफ समथिंग इज देयर, then the next thing is there.
Yes, very simple. Conditioned मतलब conditions apply. In this world, are we free of conditions or full of conditions? Huh? Just give me a very simple example. Let me give you a very simple example. Can you eat or relish chappan bhoga when your stomach is filled up to the neck? Can you enjoy? रत्नेश को क्या आप मजे कर पाओगे? छप्पन भोग मैं आपको दूं जब आपका पूरा पेट गले तक भरा है। नहीं 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 कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी मैं फुल स्टमक हूँ, मैंने अभी प्रसाद लिया है। अभी यहाँ सामने इतने अच्छे कुकीज रखे हैं, मायापुर से लाए हैं प्रभु जी। मेरी मतलब प्रसाद है तो उस हिसाब से तो मैं तब प्योर नहीं होगी, प्रसाद रूप में देख भी पाऊँ उसको, बट इच्छा होते हुए भी आई कैन नॉट ईट इट बिकॉज आई एम फुल, नथिंग कैन गो इनसाइड। कैन वी रियली एंजॉय अ ट्रिप व्हेन वी आर सिक, vomiting, having fever, having headache? Can we enjoy it? No, we'll be feeling like नहीं मेरे को घर जाना है, बस बहुत हो गया, अब मेरे सहन नहीं हो रहा। This is known as condition. Even the joy, the highest joy of the world is there in front of you. But if you are not in a proper condition, you cannot enjoy it. For example, sex pleasure. Okay, there is a very beautiful woman in front of you, but you are you are having 105-degree fever. Still, the desire will be there, very intense to enjoy, but you will not be able to enjoy. That is a problem. You will be very feeling you are in great pain. So these all are conditions. So conditioned soul matlab a soul which acts or which is bound by the conditions of this world. और जिससे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी मूड अच्छा है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं किया। सो दिस इज नॉन एज कंडीशन सोल। सो जो हमने अभी तक डिस्कस किया मैं उसको लिख देता हूँ थोड़ा सा। फुल ऑफ लाइट, दैट मीन्स नो फियर, नो एंजाइटी, and all knowledge is present. Okay, so that is what Krishna is saying, trying to tell us that उस अवार्ड में आपको आना चाहिए। And as we discussed that we are currently in the condition, we are conditioned souls, and we cannot act independently. Liberated matlab the one who is not bound by the conditions, and we all should strive for that, an enjoyment without any conditions. Our enjoyment is very much bound by the conditions. If I'll get my job, I'll be happy. That is a condition. If then, this is conditional statement. Programming में conditional statement लगता है ना? If else, if you must have used it. That is condition. That is how every living entity is there in this world. If so and so condition is fulfilled, then this. If not, then this. If I'll get pass with 9 or above CGPA, then happy. Else, morose. Yes. If my PhD gets completed on time, happy. Then sad. Sorry, else sad. If my health is in good condition, I can enjoy. Else, I'll suffer. So therefore, we should not be in this conditioned if and else condition, and we should try to strive for to become liberated. That is the point. So condition means very simple. So many conditions apply. मतलब आप कोई भी मार्केट में जाओगे प्रोडक्ट खरीदना है, उसके नीचे छोटा सा स्टार लगा एंड तो लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अभी मेरे को एक कॉल आया अननोन नंबर से, मैंने उठा लिया, तो मेरा नाम लिया शुभम गुप्ता। उनका अरे कौन है? आपको ऑफर मिलता है क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर बहुत अच्छा है। यस बैंक का क्रेडिट कार्ड हम आपको दे रहे हैं 5 लाख रुपए के
मतलब 5 लाख रुपए के साथ, एंड नो पेपर्स, नथिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक दबाएं एंड नो चार्जेस विल बी देयर। एंड आखिरी में बिल्कुल फोन जब खत्म हो रहा था, वो एक लाइन बोल दिया, शर्तें लागू। तो वो शर्तें तो अभी बताओगे नहीं, जब मैं ये वन दबा दूंगा, क्रेडिट कार्ड ले लूंगा और सब हो जाएगा, उसके बाद बोलोगे ये रही शर्तें, अब दो ये चार्जेस। सो दैट इज आखिरी में बिल्कुल 2 शब्द बोल के खत्म हो, शर्तें लागू। सो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज लाइक दैट। When you are preparing for JEE, all the coaching institute people are saying, बस तुम JEE निकाल दो, IIT चले जाओ, फिर देखो क्या लाइफ होगा। बस दे विल बी लाइक, मतलब तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने जैसा ही डिस्क्राइब करते हैं वो, JEE को पास करके IIT जाना। लाइक ऑलमोस्ट नो मिजरी ओनली नाउ। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ जॉय, इटर्निटी, नॉलेज, सब कुछ हो जाएगा। And then, as soon as you enter into IIT, within very short duration of time, one understands conditions applied. So that is there. But liberated means no conditions applied. Once Prabhupada was giving, मतलब प्रभुपाद जी के उनके एक शिष्य थे, एंड अभी शुरुआत ही हो रहा था जब इसको एस्टेब्लिश हो रहा था। तो अभी नए नए कुछ शिष्य बने थे, दे वर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रभुपाद, बिग बिग प्रोग्राम्स। तो एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी मैंने आपके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, 500 ऑडियंस आने वाला है। और 500 लोग, वेस्टर्न कंट्री की बात है, अमेरिका के। और रियली दे विल कम? he said yes Prabhupada, audience is guaranteed, they will come. I said okay, I'll do the program, I'll come. So Prabhupada came, and with few disciples, when he entered the hall, no one was there, not even a single soul was there. And Prabhupada was looking at that disciple, हाँ भाई तुम्हारी 500 audience. He said, Prabhupada, wait, they'll come. You sit in the Vyasasana, you chant Radha Madhav, audience will come. And then Prabhupada, as usual, he started with Jai Radha Madhav, he took his kartal and then closed his eyes, and intense Jai Radha Madhav, Kunja Bihari, he was chanting. When that was over, followed by some kirtan, Prabhupada was all the time having his eyes closed. And when he opened his eyes, his disciple was right. The hall was completely full. Only thing was, no one was wearing any clothes. पूरा हॉल भरा हुआ था, they were male and female both, and कोई भी एक भी कपड़ा नहीं पहना था. That was a naked club in America. And somehow this disciple, because he was so new and immature, whatever it may be, he just arranged this program. Now just imagine a scenario: Sadhu from Vrindavan, a sage from Vrindavan, always meditating on Krishna. When he sees this, what will happen? If he is a real devotee, nothing will happen. क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो शरीर देखते ही नहीं है. He just sees the soul and he just focuses on the essence. That is what Krishna says, no? Shuniche Sopakecha Pandita Samadarshana. I'm forgetting the first line of that verse, where Krishna says, a learned person, a Brahmana, does not see that ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है. He just sees the essence. Everyone is soul. So Prabhupada, without getting agitated or disturbed, he started his speech. And Prabhupada started with this directly. So, all of you have experience of the joy without clothes. बिना कपड़ों के जो मजे आते हैं, वो सब आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है. And everyone was like, स्वामी जी, ये सही बात बोले आप. ये जॉय तो कोई समझ ही नहीं पा रहा. हम सबको इंस्पायर करते हैं, you please join our club, then you will experience the joy of without any clothes. So then Prabhupada said, then you should think how much joy you will experience when you will drop this cloth also. This cloth. And then as soon as they heard this, they were like, Hari, मतलब Hari बोल तो नहीं आता था. Everyone was clapping, and Prabhupada just gave half an hour talk. 50% of them, just after the talk, came to the temple, wearing clothes, of course. So they came to the temple, and remaining were also, time to time they were visiting the temple. So that is no conditions applied for a liberated soul. Prabhupada
did not got slightest agitated by this scene of either 500 people without any clothes, or in India 10,000 people with full devotion and clothes sitting and hearing Prabhupada in Bombay. And liberated means to leave these conditions. All the conditions are applied to this body, mind, and intelligence, and to our false ego. But to the soul, it is pure, there is no condition applied. Yes, so that is what we should learn from today's session. We are at I'll just emphasize one last point. Prabhupada is mentioning here, one should be captivated by this information. This is the very important point. अगर कोई भी समझदार व्यक्ति है, he should be captivated by this information. Try to understand. इससे अच्छा substitute हमको कुछ मिल सकता है क्या? The only problem is we don't have faith in the words of Krishna. हमको नहीं है faith कि ये जो भगवान बोल रहे हैं ये सच है. अगर हमको faith होता कि हाँ ये सच है, ऐसी जगह है, ये exist करती है, कृष्ण exist करते हैं, भगवान है, so then we will not be so lethargic, so lukewarm in our practices. We would be fired up. You know, I've such a less time, only hardly 20-30 साल है मेरे पास, and इस 20-30 साल में मुझे इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना है. अरे बाहर की सक्सेस पाना बहुत आसान है, IAS ऑफिसर बनना, बिलियनियर बनना बहुत आसान है, but to go to the spiritual world, these are the qualifications. To get rid of false illusion and pride, to get rid of false association, understand the eternal, who is done with material lust, no lust in the heart. Is it easy? कभी हम हमारे एक्सरे करा लेंगे ना अंदर हार्ट का, बेहोश हो जाएंगे. टाइम टू टाइम निकल के आ जाती है रियलिटी हमारे सामने कि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है. So the whole point is we have less time, and the alternative is great. If we desire to transfer ourselves from this miserable material world to that eternal spiritual world, and this is just a reflection of reality. And Papa is saying, but it is very difficult to cut that attachment. यहाँ पे देखिए आप, Papa is clearly mentioning, he is not giving us any false hope. नहीं हो जाएगा, अच्छे से बस हरे कृष्णा कर लो, हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, या बस डोनेशन दे दो, आप निकल जाओगे इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर. नो, Baba is very clear. It is very difficult to cut the attachment. And Chaitanya Chaitamrita Prabhupada writes in the purport, it is almost impossible to come out from this influence of material energy. Only if one is very much determined to catch the lotus feet of Krishna, then only one can come out of it. अगर कोई बहुत दृढ़ता के साथ भगवान के चरण कमल को पकड़ने की इच्छा रखता है, तभी वो इस मटेरियल इल्यूजन से बाहर आ पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. क्योंकि the reward which is there is not something cheap or something which you can just purchase or you can just get by clarifying one exam or two exam, maybe it is UPSC or whichever SC. And then by saying to do it, one should practice Krishna consciousness, then there is a chance. I'm saying it's not guaranteed, but there is a chance of gradually becoming detached. अगर पक्के से अच्छे से कर लिया तो हाँ चांस है कि हाँ निकल जाएंगे, डिटैच होकर. एंड उसके लिए शुरुआत क्या करना है? फर्स्ट एसोसिएट विद डिवोटीज जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है. ऐसा सोसाइटी सर्च करो जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, एंड उनके संग में रह के डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस करो. ठीक है, ऐसे भक्ति जब कल्टीवेट होगा, धीरे धीरे भक्ति के साथ डिटैचमेंट आएगा, मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो लूज हो जाएगा, एंड देन वी कैन डेवलप अट्रैक्शन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड and will become attached to the devotional service of the Lord. Yes, and therefore Papa is saying, therefore one should take it very seriously that devotional service as described in the 12th chapter is the only way to get out of this false representation of the reactor. इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, that is devotional service. I request all of you, please study Bhagavad Gita very carefully. It's not something to say, it's the thing which Krishna is mentioning and emphasizing again and again.
हर चैप्टर के आखिरी में भगवान यही बोल के खत्म करते हैं, ओनली बाय माय डिवोशन सर्विस यू कैन परफेक्ट इट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो ओनली डिवोशन सर्विस डिस्क्राइब्ड एज प्योरली ट्रांसेंडेंटल, यही ट्रांसेंडेंटल है। एंड दी वर्ड परमम मम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, परमम मम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वैसे तो सब कुछ ही भगवान का है, यू नो, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ आध्यात्मिक जगत है और ये भौतिक जगत हमारा है। भौतिक जगत हमारे हमारे पिताजी ने नहीं बनाया, सॉरी टू से दिस, बट हमारे पिताजी भी जस्ट, you know, he is also here for some time and he has just purchased some property that too also is going to be taken away in due course of time. So we are not proprietor, we are caretaker. We are just caretaker, we are not proprietor. So proprietor is Krishna of even this material world. But why this Paramam word is used? Papa saying because the spiritual world is full of six opulence. Six opulence क्या है? Wealth, beauty, yes, strength, fame, and knowledge, and renunciation. ये छह के छह ऑपुलेंस वहां पे अनलिमिटेड है। एंड उपनिषद में भी ये कंफर्म किया गया है कि भगवान के धाम को कोई एक्सटर्नल लाइट की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट प्रभुपाद कंक्लूड्स दैट सुप्रीम अवार्ड कैन बी अचीव्ड ओनली बाय सरेंडर एंड बाय नो अदर मींस। एक ही मात्र तरीका है भगवान के शरणागत होना, और कोई तरीका है नहीं और पहुंचने का। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम परन्ति, कृष्णा इज वेरी क्लियरली मेंशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। If anyone has any question, they can ask. I'll update in the WhatsApp group from next week. We'll not have alternate sessions. We'll have 2 sessions a week, and days will be fixed. कौन से दिन हम रखेंगे। And अब मैं शायद एक से ज्यादा वर्ष भी ले लूँ, 2 वर्ष या 3 वर्ष शायद I'll take from the next session onward, because 25th जून से वर्कशॉप वगैरह चालू हो जाएगा आईटी में, and in between I also have other responsibilities which needs to be fulfilled, which has to be given time to. So rest of the time, please take care of your reading and keep chanting. I hope you are keep chanting. If you are not, then you are not captivated by this information and you are not desiring to transfer yourself to that eternal world. So please do it. Yes, Raghav, you have some question you can ask. Hare Krishna, Prabhuji, Dhanup Pranam. So I have 2 or 3 questions here in front of me. Uh, like like so if Krishna is the supreme well-wisher who wants to deliver our conditioned souls, wouldn't it have been far more merciful for him to explicitly reveal his highest, most intimate nature and pastimes directly in Bhagavad Gita, leaving absolute undeniable spiritual authority that would prevent any misinterpretation and make it infinitely easier for pure devotees to save everyone? Actually, yes, very very good question. I really appreciate it. So actually अगर हम देखें तो कृष्ण डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं बार बार। अभी जस्ट ट्रेन में एक व्यक्ति मिले, एक वर्ड पकड़ के बस उसको घसीट रहे थे फालतू में, दैट जहाँ पे भगवान बोलते हैं परमात्मा की शरण में जाओ, हाँ, एंड like that one or two words which Krishna uses in Bhagavad Gita, जहाँ पे वो जाओ बोलते हैं, वो परमात्मा की शरण लो, उनकी शरण में जाओ। तो it naturally seems like he is asking us to take shelter of someone else, someone may be superior than him or source of him, उनकी शरण में जाने को बोले। But then I told him, मगर तुम ये एक दो वर्ड्स पकड़ रहे हो, वो भी out of context. If you try to understand, then sit with me or sit with some devotees and try to understand the whole Gita as per the context, and you will understand everything. The problem is, you know, out of context चीजों को उठा लेंगे ना, तो कुछ का कुछ हो ही जाएगा. Even in my lecture, I'm saying so many things, and if someone takes one statement, just one statement, and he cuts the beginning of it and the end of it, and he just highlights that statement and makes me viral, then he can do it. But I was not meant to, I was not really, saying that thing. I was saying that thing in a particular context. Like Gaur Gopal Prabhuji, how he became famous is a whole story behind it. Someone took his joke completely out of context. He cut it down from the beginning. The whole lecture was there.
मैंने पूरा लेक्चर सुना हुआ है, उसमें से बस वो एक जोक निकाल के, वो साधुओं के ऊपर एक जोक सुना रहे थे, वो निकाल कर ही बिकेम रियली वायरल थ्रू आउट द सोशल मीडिया, ही बिकेम रियली वायरल. But that was a positive thing. Krishna was making him viral so that he can do a big contribution to the world, you know. And from there, he started his social media journey. Anyway, so the point is, why Krishna does that is very important for you. Krishna says in Bhagavad Gita, "Ye yatha mam prapadyante tam sate bhajami." ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदे भजामि हम. जो मुझे जैसा अप्रोच करता है, मैं वैसा रेसिप्रोकेट करता हूँ. One thing which Krishna will never take away from living entities is that their independent free will. हरे Not, कृष्ण. yes, Radha. सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी. मैं अपना क्वेश्चन ही इसके साथ स्टार्ट करना चाह रहा था कि इंडीड ये वर्स है यहाँ पे और भगवान बोल रहे हैं, बट अगर वो रिवील करते हैं हमारे सामने सब कुछ गीता में ही, तो इट विल बी बेटर टू गेट अट्रैक्टेड एंड इजियर टू गेट अट्रैक्टेड. लाइक हमें किसी का हाँ, नॉलेज ही ना हो तो हम अट्रैक्शन कैसे डेवलप करें? हाँ, that's the point. See, so the thing is, it's just asking you as अगर teachers, just giving one analogy, teachers अगर really merciful हो तो वो directly हमको वो सिखाते हैं जिससे पैसा कमाएं. Why KG1, KG2 and all these stuff, then, before coming to the point of that knowledge which gives us a job. क्यों नर्सरी KG1, KG2, 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 JEE, IIT, ऑल ऑफ दिस स्टफ डायरेक्टली शुरुआत से वो पढ़ाओ ना जिससे पैसे कमाते हैं. पैसे में थोड़े ना ABCD से कौन पैसे कमाते हैं, 1, 2, 3, 4 से कौन पैसे कमाते हैं, नहीं कमाते. पैसे तो हम कमाते हैं जो हम कॉलेज में रियली स्किल्स डेवलप करते हैं. Let me complete my thing, then I can take your question. So भगवत गीता जहाँ खत्म होता है वहीं से भागवतम शुरू होता है. And also in Bhagavad Gita, Krishna has given, more than sufficient information for anyone to be inspired to surrender to him. And if we study Bhagavad Gita systematically, first Krishna speaks about the whole reality of soul, so that we understand that we are misidentifying just ourselves. Then he also teaches, okay, अगर आप ये समझने के बाद भी वर्क से बहुत अटैच हो तो कर्म योग के माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट होके you can elevate yourself. Then he speaks about Gyan Yoga. Okay, if you want to search, you can go in Gyan Yoga, and then there by devotion you can understand me. Then he also speaks about if you work and give all your results to me, then your heart will get purified, then you can understand me. And then like that, so on and so forth. The point is not about revealing. The point is about they will not be able to accept. Krishna has revealed everything. Bhagavatam में सब कुछ और भगवद गीता में भी सब कुछ. प्रॉब्लम ये है कि वो सामने वाला ले नहीं पाएगा ना. दैट इज अ डिफिकल्टी. लाइक टीचर को दिक्कत नहीं है कि आपको नर्सरी से ही वो पढ़ाते जिससे आपकी जॉब लगी. दिक्कत ये कि हम ABCD समझने की हालत में अभी, हमसे वो कोडिंग होगी नहीं. जस्ट इमेजिन ABCD की जगह अगर 10 थीटा cot थीटा आ जाता तो क्या होता, दिमाग घूम जाता. Even after understanding Gita, going through all the 9 cantos, when one enters into the 10th canto, is still person, if there are not the purports of the pure devotees like Prabhupada, one will surely misunderstand the pastimes of the Supreme Lord as mundane sexual affairs with the gopis. Why? Because our heart is not purified. We are not qualified. So if those things would be put in the Gita, they will take it cheaply. Like one of the personality, very well known, Mahatma Gandhi ji, what he said? He said, I cannot accept Krishna being the same person who has spoken the Bhagavad Gita is the one who has enjoyed the Ras Leela with the gopis. मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति ने गीता बोली है वही व्यक्ति ने रास लीला भी की. So they cannot digest, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे सुप्रीम लॉर्ड के पास टाइम. तो भगवान अगर गीता में बता भी देते ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वैरायटी और अपना ब्यूटी जो कि भागवतम में आता है, हाँ, वराह पीड़म नटवर वपु करणयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम
रुद्राण वेणुरधर सुधया पूर्णेन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपथ रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। क्या ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कोई भी बेहोश हो जाए इतनी ब्यूटी सुन के भगवान की, और वृंदावन की ब्यूटी सुन के। बट फॉर दैट फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट प्योर हार्ट। भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमिदम उत्तमम्। When you are my devotee, when you are my dear friend, I will reveal the most confidential knowledge to you. Arjun. Is it clear, Raghav? So in the introduction of the 15th chapter, we started with that one. Why Krishna reveals Bhagavad Gita to only Bhakto Asima Sakachiti? और ये नॉलेज भी कृष्ण को भी स्वीकार कर पाना, कृष्ण के नॉलेज को एज इट इज स्वीकार कर पाना, ये सिर्फ उसी के लिए संभव है। मिनिमम क्राइटेरिया, ही शुड नॉट बी एनवियस ऑफ कृष्ण। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। उसके ऊपर ही कैन बी अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, उसके ऊपर ही कैन बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ट्रूली अंडरस्टैंडिंग हर एक वर्ष भगवत गीता किसके लिए बनता है? हु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। यस, सो पहले अगर बात करें सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, वहां पे व्रज मतलब होता है जाओ, यू नो, व्रज मतलब लिखा जाओ। और तो उसके जस्ट पहले वाले वर्ष में भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे विशि सत्यम ते पति जाने प्रियोसी। अब यही बात है कि लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड उठाते हैं तो खुद ही कुआं खोद के गड्ढे में गिरते हैं। जब इसके एक वर्ष पहले भगवान बोल रहे हैं मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो, और इस तरीके से करके तुम मेरे पास आओगे, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट वर्ष में ही भगवान ये जो बोलेंगे सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र उसकी शरण में जाओ। ये क्या बात हुई? मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रभु तुम ये करो मेरे लिए, और फिर एकदम से बोलो तुम जाओ यश प्रभु के पास जाओ। तो प्रभु जी आपका दिमाग ठीक है, आप भूल क्या रहे हो? तो पहले तो आप बोल रहे थे मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, आप एकदम से बोल रहे हो यश प्रभु के पास जाओ। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और वहां पे क्लियर भी बोल रहे हैं माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में। एंड दे मिसअंडरप्रेट सारे धर्मों को त्याग करके मेरे अंदर त्याग करके उस परमात्मा के पास जाओ। अब ये कौन सा नॉनसेंस मिसअंडरप्रिटेशन है? सारे धर्मों को मेरे अंदर त्याग करके सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, मेरे अंदर सारे धर्म को त्याग कर दो, ठीक है, और उसके बाद उस परमात्मा की शरण में जाओ। और उसके पहले ही बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओगे वापस। और बोल रहे मेरे पास आओगे और यहाँ बोल रहे चले जाओ। तो कंप्लीटली नॉनसेंस। तो ये बाहर जो मिसइंटरप्रिटेट करना चाहते हैं वो उनके लिए भगवान फिर इस तरीके से छोड़ देते हैं, लो तुम मेंटली स्पेकुलेट करते रहो, घूमते रहो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और करोगे वही जो तुम कर रहे हो। वो व्यक्ति जो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो बेचारा, मतलब उसकी देख के दया आ रही थी उसका जीवन मेरे को। फिर तेरे जीवन में सुख नाम की चीज नहीं है, तेरे को लग रहा है भक्ति, तेरे को भगवत गीता समझ में आ गई। हाँ, अप्लाई क्या किया तुमने अभी तक भगवत गीता से? क्या चेंज आया तुम्हारी लाइफ में? तुम बस संस्कृत के वर्ड्स लेके आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अब नाउ अंडरस्टैंड डिवोटी, ये नॉर्मल पर्सन का अंडरस्टैंडिंग है। डिवोटी अंडरस्टैंड ओके कृष्णा इज सेइंग सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, ये इसका राइट अंडरस्टैंडिंग है। एंड हाउ डज अ प्योर डिवोटी अंडरस्टैंड? शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त knows the heart of Krishna. That heart of Krishna is always in Vrindavan. So what Krishna is saying, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज मीन्स वृंदावन, वृंदावन का एक नाम व्रज भी है, व्रज धाम। कृष्णा इज सेइंग सारे धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में व्रज धाम आ जाए। So that is a pure devotee understand. He understands the heart of the Krishna, you know. अद्वैत आचार्य, he was crying to Chaitanya Mahaprabhu. पूरे 700 श्लोक में he was saying महाप्रभु पूरे 700 श्लोकों में 699 श्लोकों में मैं देख पा रहा हूँ कृष्ण इज जस्ट स्पीकिंग अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस। 699 श्लोकास अद्वैत आचार्य से मैं देख पा रहा हूँ कृष्ण सिर्फ और सिर्फ भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। बस सिर्फ ये श्लोक में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान यहाँ पे कैसे शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। एंड ही वाज क्राइंग एंड चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन्ड इट टू अद्वैत आचार्य। See, this is the way Krishna is explaining about pure devotion service. And Advaita Acharya became ecstatic and crying in the separation of Krishna. So, this is how devotees understand. Chaitanya Mahaprabhu एक श्लोक के 64 मीनिंग्स दिए थे श्रीमद् भागवतम से। This Krishna himself. वेदेश्च सर्वे अहम वेद्या वेदांत वेद वेदेव च। मैं वेदों को जानने वाला हूँ, मुझसे वेद आए, वेदांत भी मैंने ही बनाए। Okay, so ultimately to answer your question,
जो बिल्डर होना चाहते हैं भगवान उनको जबरदस्ती अपने शरण में नहीं लाएंगे, अगर दे भी देंगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। दोज हु इवन रीड भागवतम विदाउट प्रॉपर एटीट्यूड, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, भागवतम में एंटर करने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन कि आपको एनवियस नहीं होना है। भगवान के तो एनवियस नहीं, किसी भी जीवात्मा से एनवियस नहीं होना है, तब आप भागवतम में एंटर कर सकते हो। एंड दे जस्ट एंटर इनटू द भागवतम विदाउट आचार्य's commentary, without proper spiritual master, and they just completely become misguided and try to misguide people also. ठीक है प्रभु, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन, सॉरी फॉर गोइंग इन द डिटेल बट Yes, श्योर। yes, यस yes. नेक्स्ट। Thank you very much, bro. It actually answers the questions. So shall I go for the another one? यस यस प्लीज पूछिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो जैसा आपने कंडीशनड और लिबरेटेड लाइफ के लिए बताया था, सो प्रभु जी, इफ लिबरेशन इज द अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंडीशंस, but reaching the spiritual world requires us to eternally surrender and serve the Lord's desires. Aren't we just swapping material conditioning for spiritual conditioning? In that liberated state, what happens to our own independent free will to do what we want? तो अल्टीमेटली क्या है ना, हमारा फ्री विल जो है और जो हमारा इंडिपेंडेंस है वो यही है कि हम किसको शरणागत होना चाहते हैं, और ऑप्शन दो ही है हमें। क्योंकि जो हमारा ट्रू नेचर है, इनहेरेंट नेचर है लिविंग एंटिटी का, इज टू सर्व, इज टू सरेंडर, ये हमारा धर्म ही है ना। जैसे हमने डिस्कस किया ना, शक्कर का धर्म है मिठास, पानी का धर्म है तरलता, और बर्फ का धर्म है ठंडापन। एंड सिमिलरली सो अगर उनका धर्म उनसे निकाल देंगे वो एंटिटी आइडेंटिटी खो देगा। लाइक मैं आपसे बोलूँ ये नमक है और आप खाएं और वो मीठा लगे, तो आप लोग भूल क्यों मजा कर रहे हैं, शक्कर है, शक्कर का पाउडर दे रहे हैं आप और नमक बोल रहे हैं आप इसको, ये नमक नहीं है, क्योंकि ये खारा नहीं। तो जीवात्मा का बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर है शरणागत, शरणागत होके, सरेंडर होके सर्विस करना एंड प्रेम आस्वादन करना। लाइक ये उंगली का धर्म है, ये शरीर की सेवा करना। तो सिमिलरली हम सिर्फ दो ही चॉइस ले सकते हैं, या तो हम कृष्ण के शरणागत हो जाए या मटेरियल एनर्जी के शरणागत हो जाए। एंड दोनों अपने सर्वेंट्स को बड़े अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मटेरियल एनर्जी अपने सर्वेंट की, मैं अभी देख रहा था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था एंड चैंटिंग कर रहा था, बाजू में एक अंकल बैठे थे, मैं उनके पैर देखा जस्ट बेयर फुट, सो मतलब हार्ड, सो मेनी क्रैक्स, मतलब वाइट ब्लैक, पूरा पूरा काला था, कड़क पैर था, क्रैक्स थे उसमें, वाइट वाइट ऐसे लगा था। एंड आई वाज लाइक दिस इज हाउ मटेरियल एनर्जी ट्रीट्स हिज सर्व, हर सर्वेंट्स। क्या हालत कर देते। ऑन द अदर हैंड गोलोक वृंदावन, you see devotees feet more soft than the lotus pattern. How Krishna treats his servants. Sudama Vipra, when he came to Krishna, Krishna was washing his feet by his hands. अपने हाथ से भगवान चरण उनके अपने हाथ में लेके, and he was doing अभिषेक, and he was crying, lamenting कि आप ऐसी कंडीशन में हो और आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, आप इतना वॉक करके आए इतने दूर तक, थक गए हो गया। This much how love, he was running to catch Sudama, he was running to hug Sudama, waiting for him to come. Here, material energy, you serve as much as possible throughout your life. No gratitude, always gives misery. कभी माया देवी प्रसन्न नहीं होती है, भाई क्या सेवा किया, लो दे दिया, वो एक रिवॉर्ड दे दिया करके, वो मतलब मरते मरते व्यक्ति को सांस दे दिया बस एक पल के लिए, ऐसे कर देती है बस। उधर कृष्णा, अभी मैं चैतन्य चेतावत पढ़ रहा था, इट डिस्क्राइब चैतन्य चेतावत में कृष्ण से 10 लाख गुना ज्यादा ब्रजवासी जो है आनंद अनुभव करते हैं इन कंपैरिजन टू कृष्णा बाय सर्विंग कृष्ण। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कृष्ण से ज्यादा आनंद ब्रजवासी एक्सपीरियंस करते, गोपियां एक्सपीरियंस करती है
गोपाल एक्सपीरियंस करते हैं by being with Krishna, by serving Krishna, by relishing Krishna. And it's obvious also, it's natural also, na? क्योंकि Krishna is the source of all attractiveness, is the dham of all the opulences. And he is there for us to serve. मतलब serve means what? To enjoy with him. वो सेवा क्या है? वो सेवा मतलब कोई बोले आपको बहुत सुंदर व्यक्ति दिया आपको, उनकी आपको सेवा करनी है, तो वो कोई के पहाड़ लगेगा क्या? क्यों रखा प्रभु? If the world's most beautiful girl is given to us to serve her and to satisfy her by fulfilling all her desires, will it be a burden? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली ओपुलेंस वालों के लिए हम सर्वेंट बनने को रेडी रहते हैं। हाँ, मजा आता है। इट्स लाइक वाओ, मतलब वी वांट टू बी, हम बनना चाहते हैं। पीपल वांट्स टू बी सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीपल वांट्स टू बी सेक्रेटरी ऑफ रिच पीपल और ब्यूटीफुल पीपल, दे वांट टू बी अराउंड। व्हाई इन लोगों का ये सब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं? क्यों? इन लोगों के जस्ट थोड़ा करीब भी आ जाए तो कितना अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि वो एक जॉय अलग ही है, ये वैभव के साथ। और ये वैभव तो ठीक है, वैभव तो वैकुंठ में भी है, बट व्हेन दैट पर्सन also loves you the most, Gopal said in the Purport, only when we start loving Krishna, then only we can realize how much Krishna loves us. जब हम भगवान को, कृष्ण को प्रेम करना शुरू करते हैं ना, तभी थोड़ा हम अनुभव कर पाते हैं कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। सो वो प्रेम हमसे इतना करते हैं, इसीलिए तो he's having flute now. For whom he plays the flute? खुद के लिए बजाते हैं क्या? No, for all the cows, for all the birds, for all the gopas, for all the gopis. He's always playing the flute. Just imagine the source of all music, the source of all arts, when he's playing the flute. क्या प्ले करते हो, क्या आवाज निकलती होगी उससे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्रभु ऐसा बताते हैं, जब कृष्ण अपने अधर पे, अधर सुधा पे जब बांसुरी सिर्फ रख लेते हैं ना, सिर्फ रख ले, ब्रह्मा जी, शिवाजी, सारे देवी देवता अपने चेयर के कोने पे आके ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल कोने पे, अब निकलने वाला है साउंड। you know when we come to the edge of the chair, when something is exciting happening, IPL, or if you watch some cricket, सुपर ओवर चल रहा है, आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए, you come like this, you know come like this, क्या होगा, है ना? सो इस तरीके से ये तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण इज लाइक वी वांट कम लाइक दिस, एंड शास्त्र गोस्वामी डिस्क्राइब इन देयर लिटरेचर what happens to the Brajvasis, how they feel when Krishna does his pastimes for, and gradually we need to enter into these pastimes. Otherwise, the attraction will not be able to develop. हम इधर मटेरियल रस में रह जाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोले, only by hearing Ras Leela by the lips of the pure devotees, one's material lust can be completely conquered. जब कोई व्यक्ति कृष्ण की रासलीला सुनता है भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से, तब उसके हृदय में जो काम वासना, जो मटेरियल लस्ट है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दैट इज हाउ पावरफुल इट इज, क्योंकि देन वी डेवलप सच डिजायर फॉर such a beautiful pastime. I also want to serve Krishna. So this is the thing. So also नेचुरली आप देख सकते हैं, अभी हम ज्यादा लिबरेटेड है ना। अगर तो बहुत ही जगत की बात करें, जो लोग जेल में हैं, they are imprisoned, they are more conditioned than us. We are liberated in one sense, क्योंकि हम एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, इसी को लिबरेशन बोलते हैं। Why? Because we are following the rules of government. We are surrendered to government of India and also the universal government of this earth planet. जो human laws हैं, हम उसको सरेंडर करके अपनी लाइफ जी रहे हैं, इसलिए हम फ्री हैं। और जो प्रेजेंट में हमने क्या करे, नियम कानून तोड़ दिए गवर्नमेंट में, तो उनको फिर और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट। सिमिलरली हमारे साथ एज अ सोल in material world, we have very limited liberation, but in the spiritual world we have complete liberation. Narad Muni, he can travel from material world to Vaikuntha to spiritual world Golok Vrindavan. He can meet Krishna, Narayan, Brahmaji, Indradev, and even a conditioned living entity of earth planet, and can even go to the Narkas. Why? Completely liberated. He can travel anywhere. Spiritual world भी जा सकते हैं, और मटेरियल वर्ल्ड के सबसे लोएस्ट प्लेनेट नर्क में भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको, है ना? सो दिस इज थिंग। राघव, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? कंप्लीटली प्रभु जी। और जब आप अपने लाइफ के इंसिडेंट्स
साथ में शेयर कर दे तो और ज़्यादा ज्वेलरीज ऐड हो जाती हैं आंसर में. Should I go for a short answer for last question, Prabhu ji? शॉर्ट ही रखूंगा लास्ट में, क्योंकि मेरे को भी लेट हो रहा है, इसलिए Yes. बिल्कुल. So जैसा आपने लाइट वाला बताया था तो so Prabhu ji, the argument that light always requires a source relies entirely on the material analogy of the sun and sunshine. But since the absolute truth is completely transcendental, aren't we making a mistake by forcing material laws of cause and effect onto it? Why can't the Brahma Jyoti be the uncaused, self existing ultimate reality rather than needing a form to generate it like a material light bulb? वेरी गुड. सो यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि अपन ये वाला एनोलॉजी वहां नहीं लगा सकते, तो इसके लिए भी सिंपल आंसर है, भगवान का नॉलेज हम कहाँ से लेते हैं? शास्त्रों से लेते हैं. तो अगर हम शास्त्रों पे भी जाएंगे तो सेम थिंग इज गिवन देयर. मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम. कृष्ण says this energy is under my control. So this concept is there even in the higher absolute reality also. This concept applies that energy is always possessed by an energetic. So that is there. Even you so go to Upanishads, parasya shaktir vividev shuyate. पराशर शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च. It says that the Supreme Lord, the Supreme Personality, possess many energies. Parasya shakti vividev श्रूयते, multifarious energies. And स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च. एंड उससे बल, ज्ञान और क्रिया, ये एक्टिविटीज जो है ना, बल स्ट्रेंथ and Gyan knowledge and activities kriya, these all happen by the energy of the Lord. So there also this is being described that energy is always being possessed by the energetic. Yes, so we can go to Shastra also, we can take knowledge from Shastra. Ultimately we take knowledge from Shastra only. We don't rely completely on our material experience to get the knowledge about the absolute reality. That is fine, that is really true. If we do that, then we can make a big blunder. But when we can take some analogies, when those analogies are in line with the Vedic Shastra, तब फिर वहां पे न्याय शास्त्र भी आता है. न्याय शास्त्र क्या होता है? न्याय शास्त्र में बहुत सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं चीजों को समझने के लिए, लाइक अर्धकुकुटी न्याय एंड देयर आर मेनी न्याय, यू नो. आई हैव नॉट स्टडीड देम, मैंने जो प्रभुपाद के कोटेशंस में पढ़ा है तो वो बता रहा हूँ. सो उन न्याय शास्त्र में लॉजिक्स दिए गए हैं जो कि इस वर्ल्ड में हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. And those logics also similarly apply in the higher reality, absolute reality. So not everything, every experience of this world can be similarly applied to the absolute reality. On the other hand, you know, truly speaking, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला. मैं जैसे एक लाइन और ऐड करूंगा. चैतन्य चैतामृत में पढ़ा था, प्रभुपाद writes in the purport that the absolute nature of the supreme cannot really be understood by the relative experience of this world. The absolute nature of the Supreme cannot really be understood by the relative nature of this world. इस दुनिया का जो रिलेटिव नेचर है, जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उससे हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझ नहीं पाएंगे पूरी तरीके से. सो ये पॉइंट बहुत वैलिड है आपका. पर कुछ एनालॉजीज, कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हम यूज कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इन लाइन है एज पर द वैदिक शास्त्र प्रमाण, और इसलिए हम उनको ले लेते हैं. ठीक है राघव को, does it answer your question? Yes, perfectly, Prabhuji. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. But ultimately we depend on sadhu, shastra, guru, not our experience of this world to gain all the knowledge about the Lord. है ना? So this is the authority. Sadhu, shastra and guru. ठीक है, let's end it here. And I truly appreciate your questions, and I would love for all of us, सबको ऐसे एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन क्लास के एंड में होने चाहिए. That is what really signifies that हाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम चीजें लाइफ में उतारना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. तब मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा. एंड आई डेफिनेटली कीप द सेशंस आल्सो इवन शॉर्टर देन दिस वन, 30-45 minutes maybe, and then remaining can be Q&A for same time, 30-45 minutes. So it will be great. है ना?
ठीक है, so we'll try to do it. Try to ask as many questions as possible.